Hello everyone, this is your Pritam sir once again, and you are watching Pritam's English Mantra KG to PG ଏବେ ହବ English easy. Well, ଆମେ discussion କରୁଥିଲେ Ballad of Father Gilligan. এই Ballad of Father Gilligan এই poem ରେ ମୁଁ already ଆଗରୁ ଦୁଇଟି ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଛି. ଏଇଟା ହେଉଛି এই poem ର ଥାର୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ. ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୁଇଟି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ stanza 1 to stanza 8 ଯାଏ explain କରିସାରିଛି. तो आजिरो ये वीडियो रे आम स्टैंजा 9 टू एक्सप्लेन करिबा. सो विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मोमेंट लेट्स गेट स्ट्रेट टू द बिजनेस. सो स्टैंजा 9 टी कोन अछि देखि दबा. तो स्टैंजा 9 टी एमती लिखा जायछि एंड इज द पोर मैन डेड ही क्राइड ही डाइड एन आवर एगो द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन इन ग्रीप स्वेट टू एंड फ्रो. So in this stanza, the poet describes Father Gilligan asking the sick man's wife whether her husband had passed away, and the wife answering that he had, in fact, died just an hour ago. Father Gilligan was so distressed to hear this that he couldn't stand steady and began to sweat. जदि मु एक सिंपल टर्म रे बुझेबी तले मु एमती कहबी as soon as पीटर गिलिगन रीच द सिक मैन्स हाउस. तो पीटर गिलिगन सिक मैन को घरे पहुंचवा मात्र के ही आस्क्ड हिज वाइफ, से तांको स्त्री को पचाइले, माने से जो सिक मैन को स्त्री को पचाइले वेदर हर हस्बैंड वाज अलाइव और डेड, तांको हस्बैंड जीवित ना मृत. बट द सिक मैन्स वाइफ वाज सरप्राइज्ड टू सी हिम फॉर द सेकंड टाइम. किंतु सिक मैन को वाइफ फादर गिलिगन को सेठारे सेकेंड टाइम देखिकी से सरप्राइज हो गले. कहीं ना बिकॉज हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी रिसीव्ड द लास्ट सैक्रामेंट फ्रॉम द प्रीस्ट एंड हैड डाइड हैप्पीली. कारण तांको हस्बैंड को ऑलरेडी डेथ हो सारी एवं डेथ पूर्व तांको जो लास्ट राइट ए फादर ही परफॉर्म करथिले जोथि पई तांकर हैप्पीली डेथ हेतिला. So he was unable to understand. So she was unable to understand why the priest had come again. So she asked father, you come again? तेणु से बुझी पारे जे ये तो ऑलरेडी लास्ट राइट्स परफॉर्म करी गले पुणी कौन पे आसिले. तेणु करी से आश्चर्य होई पचाइले फादर यू कम अगेन. सिंस द रिचुअल हैड ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड apparently by Father Gilligan, the widow was surprised to see the father again. तमने एटा ऑब्वियसली कथा नुहे कि जेहेतु जे ऑलरेडी हजबैंड को डेथ हो सारी तो डेथ हवा पूर्व लास्ट जो डेथ बेड पाखरे से जो डेथ राइट्स टा किए परफॉर्म कर फादर गिलिगन माने माने वाइफ ही देखी फादर गिलिगन परफॉर्म कर. बट रियलिटी टा कौन हमें परे जानिबा. ओके ओके सो लिटिल डिड सी नो दैट एन एंजल हैड कम टू डू सो. सी कौन एटा जानिचंती कि जे एठी तो प्रकृत कथाटा कौन घटिची जे एठी पीटर गिलिगन तो से जो चेयर रे बसी समय निद हो गला से एवं सारा राति से चेयर रे सोइले एवं उठिया मात्र के से जो सिक मैन को घर को माने घोड़ा नहीं कि दौड़िले एवं सेठी केमती पीटर गिलिगन पहुंचले एक कथा कौन लिटिल डिड सी नो दैट एन एंजल हैड कम टू डू सो. तो एक कथा सिक मैन को वाइफ जान नथिला ना. सिक मैन को वाइफ मतरे जे डेथ हजबैंड को डेथ बेड को अटेंड करथिले से पीटर गिलिगन. तो तांको आउ थरे देखि से आश्चर्य पचारे माने फादर यू कम अगेन. इन फैक्ट व्हेन द मैन वाज ऑन द पॉइंट ऑफ ब्रीथिंग हिज लास्ट a person looking like the father had appeared and said the final prayers. तामाने एठी कौन जो सस्पेंस ता थिला जे किए जाई पहुंचला सेठी किए लास्ट राइट परफॉर्म कला. तो इन फैक्ट when the man was on the point of breathing his last, man कहले कोडा जो सिक मैन जे डेथ बेड थिले जेतले when he was on the point of breathing his last, point of breathing his last माने जेतले से मरिबा ऊपर थिले a person looking like the father had appeared. तो फादर गोटे अपीयरेंस एक्जाक्टली फादर ऊपर देखा जन लोक से अपीयर करथिले एवं तांकर फाइनल प्रेयर्स परफॉर्म करथिले. तो व्हेन पीटर गिलिगन केम टू नो दैट द सिक मैन वाज नो लॉन्गर अलाइव एंड हैड ब्रीथ्ड हिज लास्ट पीसफुली बिकॉज ऑफ हिज प्रेयर ही वाज वरीड एंड बिगेन टू स्वे टू एंड फ्रो इन ग्रीफ. तो स्वे टू फ्रो माने कोन ता माने विचलित होई पड़िबा. तो जेते बेले पीटर गिलिगन जानिले जे ऑलरेडी से लोकर डेथ हो सारी तो एक कथा जानी सारा परे से विचलित हो पड़े. तामाने एठी कौन हैला ना एठी फैक्ट हैला कौन ना एन एंजल इन द गाइस ऑफ पीटर गिलिगन केम टू द सिक मैन बिफोर हिज डेथ टू परफॉर्म द राइट्स ऑफ ब्लेसिंग फॉर द डाइंग सोल.
एबे आसीबा स्टांजा 10 को। तो स्टांजा 10 को जीवा पूर्व स्टांजा 10 टी केमती लिखा है कौन लिखा है बुझदबा लिखा है कौन ना फर्स्ट लिखा है व्हेन यू वेर गन ही टर्न्ड एंड डाइड आज मेरी as a bird the old priest Peter Gilligan he nailed him at that word। ये होची स्टांजा 10। एबे स्टांजा 10 को हमें एक्सप्लेन करिबा बुझिबा। तो इस स्टांजा इन दिस स्टांजा the poet says that the sick man's wife told Father Gilligan that her husband died a happy death as merry as a bird after he had left। Hearing this Father Gilligan knelt on the ground। तमने simply स्टांजा रे एती कहैछि जे the poet says that the sick man's wife ये जो सिक मैन को वाइफ जो पचारे जे फादर पचारे जे से लोकर डेथ हो सारी ना ना तो सी कहले जे फादर गिलिगन कहले जे हर हजबैंड डाइड अ हैप्पी डेथ आज मेरी एज ए बर्ड आफ्टर ही हैड लेफ्ट। तो सी लास्ट रिचुअल्स परफॉर्म करके गला परे तांको हजबैंड माने हैप्पी डेथ हेछि। हियरिंग दिस फादर गिलिगन नेल्ड ऑन द ग्राउंड। फिर तमने ठीक में कौन बुझिले को मैं सिंपल टर्म रे बुझिबा तले एमती बुझिबा व्हेन द प्रीस्ट इंक्वायरीड हर इफ द सिक मैन वाज डेड शी सेड टू हिम दैट हर हस्बैंड डाइड चीयरफुली आफ्टर ही हैड लेफ्ट। द विडोज वर्ड मेड फादर गिलिगन रियलाइज दैट द एवर मर्सीफुल गॉड हैड सेंट वन ऑफ हिज एंजल्स टू परफॉर्म द लास्ट रिचुअल्स टू द डाइंग मैन। ता माने जेते बेले ई विडोंकर ई जो कथाडी सुनिले फादर गिलिगन तो सी रियलाइज करि पाइले जे जे ईश्वर जे कि कृपामय सी तांकर गोटे एंजल को सेठी पठेई चंदी कोन पई टू परफॉर्म द लास्ट रिचुअल्स टू द डाइंग मैन। द प्रीस्ट वाज हम्बल्ड एट दिस एंड नेल्ट एंड प्रेड। तो एक कथा को रियलाइज कला परे पूरा माने जो फादर गिलिगन से सेठी आंठी पड़िले एवं ईश्वर को प्रार्थना कले। ए जो पोएम रे ए जो स्टैंजाटी हमें बुझिले ए स्टैंजार फिगर ऑफ स्पीच कौन होइछि ना गोटे हम देखिबा द पोएट यूजेस द डिवाइस ऑफ सिमिली इन द सेकेंड लाइन ऑफ द 10th स्टैंजा व्हेन द डेड मैन्स वाइफ कंपेयर्स हर हस्बैंड विथ अ बर्ड saying he was in a similarly happy state when he died as merry as a bird। That means the sick man after receiving the last rites died happily as merry as a bird। The poet uses the figure of speech that is a simile to compare the mood of the dying man to a merry bird। So that means एठी poet compare करिसंती then poet जो से जो sick man कर wife तांको हस्बैंड डेथ टाको से कहिसंती आज मेरी एज ए बर्ड। तो एमती काहेकि ना रीजनटा बुझ जनरली गोटे बर्ड ताको केज रे रखा जाए जेते बेले से केज रु से बर्ड टाको फ्री कर दिया जाए तो पक्षीटी खुशी खुशी ता दुनिया को उड़ी जाए कारण आज पर्यंत से गोटे आबद्ध जीवन बीतुला तो बर्तमान ताको फ्रीडम मिल जाए लिबर्टी मिल जाए। तो ठीक से परी तो एठी आम बॉडीटा होचे गोटे केज एवं ए बॉडी रो बर्ड किए ना सोल। तो जिते बड़े डेथ हो जाए यदि परफेक्टली रिचुअल्स अनुसार डेथ हुए तेबे ताको कहा जाए जे पक्षी जेमिति ता दुनिया को उड़ी जाए ठीक सेमिति सोल मध्य ता दुनिया को उड़ी जाए यदि परफेक्टली रिचुअल्स परफॉर्म हुए। So the sick man after receiving the last rites died happily as merry as a bird। The poet uses the figure of speech that is a simile to compare the mood of a dying man to a merry bird। So एठी आ गुड एक्सप्रेशन बुझिबा जेठी गुड एक्सप्रेशन ए लाइन अछि ही नेल्ड हिम एट दैट वर्ड। एठी एग्जाम रे क्वेश्चन पके दे पारे जे ही एक्सप्लेन द लाइन ही नेल्ड हिम एट दैट वर्ड। ता माने एठी कोन बुझिबा ना एक्चुअली व्हेन द priest inquired her if the sick man was dead she said to him that the sick man died cheerfully after the priest had left। ମୁଁ already କହି ସାରିଛି the widow's word made Father Gilligan realize that the ever merciful God had extended his helping hand to him। The priest was humbled at this and knelt and prayed। He realized that God the divine had compassionately sent an angel to minister the last rituals to the dying man so that both the sick man as well as the priest were saved from damnation। ता माने जेते बेले फादर डेथ बेड रे थिबा से जो सिक मैन को पत्नी को पचारिले जे तांको स्वामी मृत ना जीवित तो से फादर को उत्तर देले जे तांको गला परे से खुशी रे मृत्युवरण कले। तांको द्वारा फादर गिलिगन अनुभव कले जे ईश्वर जे कि करुणा सागर तांको निकटरू
ତାଙ୍କ ସହାୟତାର ହାତ ପ୍ରସାରିତ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଏବଂ ତାଙ୍କରି ରୂପରେ ମାନେ ପିଟର ଗିଲିଗାନଙ୍କ ରୂପରେ ଏକ ଦେବଦୂତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ବେଡ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସକୁ ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ହି ନେଲ୍ଡ ହିମ୍ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାର୍ଡ, ଏ କଥା ଏ ୱାର୍ଡଟାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ସେଠି ମାନେ 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 ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଷଷ୍ଠାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରିବା। ଓକେ, ତ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରେଣ୍ଡର କରିକି ସେଟା ସେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତା ମାନେ ହେଉଛି ହି ନେଲ୍ଡ ହିମ୍ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାର୍ଡ। ଏବେ ଆସିବା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 11 କୁ। ତ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 11 କ'ଣ ଅଛି ନା ହି ହୁ ହାଥ୍ ମେଡ୍ ଦ ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ ଫର୍ ସୋଲ୍ସ ହୁ ଟାୟର୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲିଡ୍ sent one of his great angels down to help me in my need। এটি দেখিবা এই যে প্রথম তিনটা লাইন ଅଛି he who hath made the night of stars for souls who tire and bleed। তারপরে যে ଅଛି এই যে দুইটা লাইন যে কুহাগলা he who hath made the night of star for souls who tire and bleed, এই যে দুইটা লাইন কু আমি কইবা the mercy of God। So earlier the poet had evoked the image of God who brings ease to the laboring mankind by spreading over the earth the soothing darkness of night and blessing the troubled souls with balm of soothing sleep, as I have already mentioned. Here we find almost a repetition of that idea where the poet asserts that God had made the night for the troubled humanity। तामाने पूर्वरु पोएट एटी वर्णना करथिले जे ईश्वर किपरि भाबरे रात्रिर अंधकार स्वरूप आवरण सर्जना करी मनुष्य रूपक तांकर संतान मानकु निद्रार परसरे सुआई देउथिले। तेबे एई जो धाड़ी रे एई जो लाइन रे तो सेम पिक्चर होला पुणी थरे पोएट रिपीट करिसेंती। तो एठारे माने पोएट ईश्वर को दिन रातिर स्रष्टा रूपे रूपायित करिसेंती एवं तांकर दिन राति सृष्टि करी कृपा वर्णना करिसेंती। तामाने एठी से कहिसेंती एम्ति एठी एम्ति से कहिसेंती जे गॉड हैज मेड द नाइट ऑफ स्टार्स, द ब्यूटीफुल स्टारी स्काई एंड पीसफुल नाइट आर गॉड्स क्रिएशन टू कंसोल द सफरिंग पीपल। हियर सफरिंग पीपल मीन्स व्हाट? तो जनरली वी द पीपल, ओके, बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग फॉर गॉड। आम समस्ते गॉड को पई काम करूचे। God is the architecture of this universe. The purpose of his creating the night of star is to enable his creature who are exhausted, worn out and shattered to have respite from the pressure of work। तामाने God ए यूनिवर्स रो स्रष्टा एवं से ए यूनिवर्स रे नाइट स्टार एगुडा को सब क्रिएट करिकी कोन पई क्रिएट करिसेंती ने एथि पई जे तांको क्रिएचर, ओके, जो मन दिन तमाम काम करी थकी जाइथिबे, एग्जॉस्टेड माने थकी जिबा, वर्न आउट माने हालिया होई जिबा, सैटर्ड माने भांगी पड़िबा, तो से माने दे गॉट रेस्पाइट माने स्त्राई पाइबे फ्रॉम द प्रेशर ऑफ वर्क, माने दिन तमाम जो कार्य प्रेशर टिके मुक्ति पाइबे बोली से रातिर सृष्टि करिसेंती। तो ही हु हैथ मेड द नाइट ऑफ स्टार ता माने गॉड हु हैड माने एटी हाथ माने होची हैज, गॉड हु हैज मेड द नाइट ऑफ स्टार। काहे कि नाइट ऑफ स्टार क्लिक करि ऑलरेडी कहि सरिछि फॉर सोल्स हु टायर एंड ब्लीड। फॉर सोल्स हु टायर एंड ब्लीड माने किए ना एटी को मान को टायर एंड ब्लीड सोल बोली कुहा गला ना आम मान को कुहा गला। सो एटी फॉर सोल्स हु टायर एंड ब्लीड ता माने सेही व्यक्ति माने जो माने क्लांत अवसन्न जंत्रणासिक्त, ओके, तो से मानु कुहा गला हु टायर एंड ब्लीड। तो फॉर द सोल्स हु टायर एंड ब्लीड ता माने से मान को गॉड सेंट एन एंजल इन द फॉर्म ऑफ द प्रीस्ट आई मीन फादर गिलिगन टू अटेंड द डाइंग मैन्स लास्ट मोमेंट्स। एबे आसवा स्टैंजा 12 को। तो स्टैंजा 12 कौन अछि ना ही हु इज wrapped in purple robes with planets in his care had pity on the least of the things asleep upon the chair। तले कौन अछि प्रथम लाइन कौन अछि ना ही हु इज wrapped in purple robes। तो एठी हमें बुझिबा रोब्स माने कौन ना रोब्स माने होछि रोब्स आर लॉन्ग फ्लोइंग गारमेंट्स worn by a priest of the church for official or ceremonial occasion। तो माने रोब कहिले गोटे लंबा पोशाक जो कि गोटे माने लॉन्ग फ्लोइंग गारमेंट्स worn by a priest of the church माने जने फादर जो गाउन टाइप रो ड्रेस पिनंती ताकू रोब कुआ जाय जोटा कि गोटे ऑफिशियल और सेरेमोनियल ओकेजन ले पिंधा जाय। त माने एठी कोन कुआ गला ना तो पोएट इमेजिन्स गॉड एज ए पैरिश प्रीस्ट। त माने ये जो प्रथम जो लाइन टा अच्छी तार अर्थ बुझापी हेले ताने ये जो ही हु इज wrapped in purple robes तो ये ही कहले क्या बुझेला ना ही कहले बुझेला गॉड को बुझेला। ताने द पोएट इमेजिन्स गॉड एज पैरिश प्रीस्ट जेमिति पैरिश प्रीस्ट पर्पल रोब रो गोटे ड्रेस पिंधि थाए ठीक सेमती जे गॉड को पोएट इमेजिन कले जे एज ए पैरिश प्रीस्ट हुज पैरिश इज द होल यूनिवर्स। जेमिति गोटे पैरिश प्रीस्ट रो पैरिशटा हूँ तार मेन इंपोर्टाट जमी पीटर गिलिगन
ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସେଇ ପ୍ୟାରିସନର ଉପରେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତ ସେ ଦିନ ରାତି ମାନେ ନ ଶୋଇ ମାନେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସେ ଡେଥ୍ ବେଡ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରି ଚାଲୁଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ କେୟାରରେ ସେ ପ୍ୟାରିସଟା ଥିଲା ନା। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଣ୍ଟାୟାର ଅର୍ଥଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ୟାରିସ, अंडरस्टूड। एवं से एंटायर अर्थ जो प्यारिस है तार से प्यारिसनर आम समस्ते हेले गॉड कर प्यारिसनर। द पोएट इमेजिन्स गॉड एज ए प्यारिस प्रीस्ट हुज प्यारिस इज द होल यूनिवर्स। ताले गॉड होचंती माने ए एंटायर यूनिवर्स रो फादर एवं ए एंटायर यूनिवर्स टा होची तांको प्यारिस, ओके, एंड होल यूनिवर्स एंड ऑल द प्लैनेट्स आर इन हिज डोमिनियन। जेमिति कि पीटर गिलिगन कर डोमिनियन ले थिला पूरा से प्यारिस टा, जो प्यारिस रो हाफ ऑफ हिज प्यारिसनर वेर इन डेथ बेड्स। तो जो माननको पई परफॉर्म करिबा लास्ट राइट परफॉर्म करिबा तांकर ड्यूटी थिला, जोथि पई से दिन राती माने दिन राती से डे एंड नाइट ऑल थ्रू आउट द डे एंड नाइट ही वेंट ऑन अटेंडिंग द डेथ बेड ऑफ द सिक प्यारिसनर विदाउट टेकिंग रेस्ट। तो ठीक सेमती गॉड होचंती ए एंटायर यूनिवर्स तांको पई गोटे प्यारिस एवं से एंटायर यूनिवर्स रो सी होचंती फादर गिलिगन। त माने सी होचंती फादर, ओके। सो आउ जे फादर सी गोटे कोन पियंती ना गोटे रोब पिंदंती। तो सेति पई एठी जो कहला ही हु इज रैप्ड इन पर्पल रोब्स, तो ही कहले गॉड आउ ही कहले मध्य आगु आगु बुझैला ना फादर को बुझैला, कारण फादर ही पर्पल रोब रे बुझंती। ताले एठी गॉड को कंपेयर करा गला, सॉरी फादर को कंपेयर करा गला का सहित गॉड सहित। सो here the poet imagines God as a parish priest whose parish is the whole universe and all the planets are in his dominion. Hence Peter Gilligan expressed his deep sense of gratitude by saying that though God the Almighty takes care of the whole planet also had pity on the tiny creature like him. तामन हेडी जो लिखा जाइनी list of the things, had pity on the list of the things, तो से हार्ड पिटी ऑन द लिस्ट ऑफ द थिंग्स ए लाइन माध्यम रे पीटर गिलिगन एक्सप्रेस्ड हिज डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड बाय सेइंग दैट दो गॉड द ऑलमाइटी टेक्स केयर ऑफ द होल प्लैनेट, जदियो गॉड जे कि सारा प्लैनेट रो केयर नउचंती तथापि हार्ड पिटी माने करुणा देखैचंती, कृपा करिसंती। अ टीनी क्रिएचर लाइक हिम, लिस्ट ऑफ द थिंग्स माने कोन टाइनी क्रिएचर लाइक हिम माने मो परी गोटे छोटिया जीव, ता माने ए एंटायर अर्थ रे पीटर गिलिगन को परी भगवान केते पीटर गिलिगन सृष्टि करिसंती, माने हजार हजार कोटी 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 मनुष्य सृष्टि करिसंती, ओके। एवं ता सहित गॉड एंटायर प्लैनेट रो केयर नउचंती, ओके। एते सब परे भी, ओके, तांको ई विशाल पृथ्वी रे विशाल विश्व ब्रह्मांड रे पीटर गिलिगन रो पोजीशन कोन, जेमिति समुद्र रे अनेक बाली भितरे गोटिए बाली जहा होत पीटर गिलिगन को पोजीशन सेया थिला, किंतु तथापि मध्य से तांको ऊपर कृपा करी तांकोरी बेसरे जड़े एंजेल को तांको काम करिया पई पठेइचंती। सो पीटर गिलिगन एक्सप्रेस्ड हिज डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, तांकर माने ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करचंती गॉड को। एक कथा कही, हे गॉड जदियो आपण सारा यूनिवर्स को सारा होल प्लैनेट को आपण माने केयर करूचंती, टेक केयर करूचंती, तथापि मो भली गोटे टाइनी क्रिएचर को आपण कृपा करिचंती। तो एक्सप्रेशन द लिस्ट ऑफ द थिंग्स, एठी जो एक्सप्रेशन टा लिखा हिच द लिस्ट ऑफ द हार्ड पिटी ऑन द लिस्ट ऑफ द थिंग्स, ओके। एटा कौन शो करूची ना ह्यूमिलिटी ऑफ फादर गिलिगन। ता माने द एक्सप्रेशन द लिस्ट ऑफ द थिंग्स रेफर्स टू द पर्सन और क्रीचर विदाउट हैविंग एनी इंपोर्टेंस। ता माने लिस्ट ऑफ द थिंग्स काहू कहा जाए ना सेही पर्सन को कहा जाए बा सेही क्रीचर को कहा जाए जहार कोनोसी इंपोर्टेंस न थाए। ता माने इन द पोएम पीटर गिलिगन कंसीडर्स हिमसेल्फ वन ऑफ द लिस्ट ऑफ द थिंग्स इन द वास्ट क्रिएशन ऑफ द ऑलमाइटी। ता माने ए विशाल ब्रह्मांड रे से निजको गोटे माने छोटिया क्रिएचर सहित कंपेयर करिसंती, जे ए छोटिया क्रिएचर पई आपण माने ब्रह्मांडर ठाकुर होई मध्य आपण मते भी देखुचंती हला, एवं मो नीड रे आपण आपणकर गोटे एंजेल को डेप्यूट कले टू अटेंड द डेथ बेड ऑफ द सिक मैन। तो ए जो पोएम द्वारा पोएट कौन कर ना गॉड कर ग्लोरीफाई कर स्टांजा द्वारा कौन कहते ना द पोएट ग्लोरीफाइज गॉड बाय सेइंग दैट गॉड इज द ऑलमाइटी ऑफ द यूनिवर्स, planets and stars under his guidance, but he was mindful of the need of an insignificant person like Peter Gilligan and deputed one of his angels to perform his duty in his absence. God and nature never take rest. The planets, the stars, the moon, the sun, etc. all do their work night and day. They never get tired. But we the human beings have physical limits and we get tired, okay, if we don't take rest. In it, एबे ए पोएम रो मेसेज कोन ना मेसेज होची द मेसेज दैट द पोएट इज ट्राइंग टू कन्वे थ्रू द पोएम
The Ballad of Father Gilligan is that God helps those who help others. Simple message. Father Gilligan, who had complete faith in God, fell asleep when he was supposed to be beside the sick man to give the last sacrament. Then the sick man's soul would be graced and he would go to heaven. But while he was sleeping, God sent his angels in Father Gilligan's disguise to the sick man's house. God knew Father Gilligan was extremely tired, so God helped him in his time of need. तामाने एठी गॉड माने माने गॉड को ग्लोरीफाई करिचंदी पोएट ए पोएम माध्यम रे. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. पुणी देखा हबो आउ गोटे वीडियो लेसन सहित. जदि एई जो पोएमटा को मु कंप्लीट कली बलेड ऑफ फादर गिलिगन, जदि एथिरे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिया पई तमे माने चाहुचो जे मु किछि एथिरे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करे बोली तले कमेंट सेक्शन में लिखिले मु खुशी हेबी एवं खूब शीघ्र आरो एई पोएम रो क्वेश्चन आंसर नै कि आसीबी. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो लेसन. जय जगन्नाथ.